my dear friends, students, and all other learners who who wish to learn in the days of COVID-19 while staying at home. Once again, good afternoon to all of you. I wish you all the best. I pray for your health, for your good health. And let us start our topic. Today I have taken the topic or the lesson An Excellent Father, and this is in our textbook of English of class 10th, and this is the second chapter, second lesson, and actually it is a novel. I will write here. An Excellent Father. An Excellent Father. And this An Excellent Father, this is a small part of the novel which is introduced in our English of class 10th and titled as An Excellent Father. Actually, it is taken from the novel Pride and Prejudice. Pride, Pride and Prejudice. Prejudice. Pride and Prejudice. And this is a very interesting novel, a world classic. And this novel has been written by one of the most intellect and world famous classic writers named Jane Austen. Jane Austen. It's a novel by Jane Austen. Jane Austen. And this is in the form of a fiction, but I would say that most of the story is based on the life history of Jane Austen herself. Most of the scenes, comic scenes, are the story is portrayed on the basis of her own life. And I will talk about the setting of the novel. Setting up. Setup or setting up, or I will talk it to or plot. प्लॉट ऑफ द नॉवल. अब प्लॉट ऑफ द नॉवल हमारे पास क्या है कि नॉवल किस जगह पे लिया गया है, कहां से लिया गया है. तो दिस नॉवल इज सेट इन ए विलेज, a rural area. Village name is the name of the village is Longburn. It's a village जिसका नाम है लॉन्गबर्न, LONGBURN. And where is this Longburn? This is in the town of Meryton. टाउन नाम हमारे पास है Meryton, 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 and in the city of London. And city कौन सा है? सिटी ऑफ लंदन. तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि सबसे पहले बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग. एक्चुअली आई एम नॉट टीचिंग, आई एम facilitating you people as a guide, as a friend, and a learner of the knowledge, a learner of literature. सबसे पहले हमारे पास we need to have a kind of sequence, because the sequence of anything, any plot, any novel, any drama, any play
or any poetry helps us to learn us to imagine it properly. If we imagine it with our mind, it will be a permanent learning for us. Therefore, it's my style of teaching that I will always go through the sequence from the basic history, from the plot, and as you think, as you people, आपने देखा होगा जब आप लोग कोई फिल्म देखते हो, कोई ड्रामा देखते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे ओपनिंग ऑफ द सीन, ओपनिंग सीन एक हमारे पास होता है ओपनिंग सीन में। तो इसी तरह से दिस प्ले, हाँ, मुझे बात याद आई कि दिस प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज आल्सो बीन पिक्चराइज्ड, इट हैज बीन आल्सो फिल्माइज्ड, और इसमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक मशहूर एक ड्रामा भी, इसका एक फिल्म भी बनाई गई है। तो मैं उस साइड अभी नहीं जाऊंगा कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें जिन्होंने काम किया है। तो it was set in London. I will talk about only this chapter now. Alongside, I will give some extra knowledge about, so that not only the people of 10th standard, but also up to the higher levels. For example, senior secondary schools, colleges, university students, or who are aspirants of NET JRF. So those people can have also some knowledge from here. First of all, I have as I have talked about that, this is the opening scene. ओपनिंग सीन में क्या है, एक हमारे पास रूरल एरिया, देहाती एरिया है, गांव है, जिसमें क्या है, गांव को उसका नाम क्या, लॉन्गबर्न है। एंड वेयर इज लॉन्गबर्न? लॉन्गबर्न इज द इन द टाउन ऑफ मैरिटन, एंड मैरिटन इज इन लंडन, सिटी ऑफ लंडन। एंड वेयर इज लंडन? इट इज इंग्लैंड। नाउ आई विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस नॉवल, कि हु आर द पीपल who are going to run this novel, this story of the picture. I will come through the strengths. First of all, we have the Bennett family. I will wipe it out first. Hope you will note this. आप इसको पॉज करके भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे हर बार आपको दोबारा से देखना हो, रिप्ले करके आप पॉज करके इसको देख सकते हो। सेटिंग ऑफ द नॉवल हमारा हो गया है। एंड अभी मैं बात करूंगा हमारे जो इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं, किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर जो वो भी हमारे पास एक सीक्वेंस, इट शुड बी आल्सो इन द सीक्वेंस, बिकॉज सीक्वेंस विल हेल्प अस गोइंग थ्रू द स्टोरी प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेनेट फैमिली। तो बेनेट फैमिली में हमारे पास कौन है? मिसेस बेनेट एंड मिस्टर बेनेट। नंबर 1 हमारे पास है MRS, मिसेस बेनेट, BENNET। नंबर 2, दूसरा सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट। आफ्टर दैट, इसके बाद हमारे पास है इन्हीं की फैमिली, जो बेनेट फैमिली है, इसी में आते हैं हमारे पास थर्ड कैरेक्टर जो हमारा है, इनकी डॉटर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। दे हैव 5 daughters. The eldest of them is Jane Bennett. इनको मैं अलग से नाम दूंगा सीरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल में है जेन बेनेट, जेन बेनेट। And it is to be noted here that this Jane Bennett is the character of a writer. हमारे जो राइटर है जैनी एस्टन जो है, तो जैनी एस्टन जो है, इनका ही कैरेक्टर रोल है। इन्होंने अपने आप को ही है कैरेक्टर यहाँ पे तैयार की बनाया हुआ है अपनी बेस पे। तो दिस इज आल्सो हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। जेन बेनेट इज हीरोइन ऑफ दिस नॉलेज। जेन बेनेट। नंबर 2, एलिजाबेथ बेनेट, एलिजाबेथ, ELIZABETH, Elizabeth Bennet. Number 3, we have Mary Bennet.
मैरी बेनेट। नंबर 4, मैरी बेनेट के बाद हमारे पास है किटी बेनेट। किटी बेनेट एंड लास्ट ऑफ ऑल लिडिया बेनेट। LYDIA, लिडिया बेनेट। लिडिया बेनेट। These are all 5 daughters of this Mr. and Mrs. Bennet. तो this all is also called the Bennet family. इसको हम Bennet family भी कहते हैं, Bennet family. This is also called Bennet family. After that we have other characters. Mrs. Long, ये थे हमारे पास 3, नंबर 4, नंबर 5 character, 6, 7 and now we have the 8th character. 8th character हमारे पास है Mistress Long, Mr. Long and Mrs. Long. Mr. Long, IX, 9th, MRS. Mrs. Long and 10th we have Mr. Bingley. Mr. Bingley. Friends, this list did not stop here. ये एक लेंथी लिस्ट है कैरेक्टर्स की, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर डॉर्सी है, आफ्टर दैट हमारे पास मिस्टर बिंगले जो उनकी सिस्टर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, बाकी फैमिली आती हैं। लेकिन बट वी आर हियर सपोज टू टीच यू ओनली अबाउट दिस एन एक्सीलेंट फादर। अगर मैं आपको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो इट विल बी ए लेंथी वीडियो एंड ड्यू टू very slow network in the UT of JNK, I am getting very much trouble. It takes me to 3 or 4 days to upload a video, a single video of 20 or 25 minutes only. And taking in consideration of the time limit, I will consider go through only this an excellent father. यही जो हमारे पास है। बाकी प्राइड एंड प्रेजुडिस एक बहुत बड़ा लेंथी नावल है जिसमें से एक छोटा सा पार्ट हमारे पास लिया गया है और जिसको टाइटल बहुत ही अच्छे स्मार्टली दिया गया है, टाइटल एन एक्सीलेंट फादर। इसमें आप जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आई विल कंटिन्यू व्हेन, तो यू विल गेट थ्रू दैट व्हाट हाउ ब्यूटीफुल इट वाज क्रिएटेड। तो दीज आर आवर कैरेक्टर्स। दिस कैरेक्टर विल बी लेंथी। I hope you. I will start. I will stop here. It's going in 14 minutes. Let me continue. I will continue it. Okay. Let us continue our lecture. I have talked about the basic structure of this novel. I have talked about the plot of this novel, where this novel was set up, and it was set up in the village of Longbourn, which is in the town of Meryton. And Meryton, where is Meryton? Meryton is in the city of London. And we have talked about the characters. We have first main characters which are going to act here in this in Excellent Father. So these are only these are enough here. These characters are Mr. and Mrs. Bennet. After that, they have the 5 daughters. But in our chapter, I think there are this second daughter. After that, Kitty and Lydia. ये इन्हीं का रोल हमारे पास है। बाकी जो हमारे पास नंबर 1 और 3 जेन बेनेट जो हैं, जेन बेनेट और मैरी बेनेट, इनका यहाँ पे हमारे इस सेक्शन में उतना रोल नहीं है।
पर चलो फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नो कम्स द टर्न ऑफ ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग ऑफ द सीन और ओपनिंग ऑफ द नॉवल। तो वी हैव, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, how this novel starts, or I will say that opening lines of this novel. तो ओपनिंग लाइंस हमारे पास हैं, दिस इज विपन राज, I have thought of on the topic an excellent father. An excellent father is actually a lesson. Opening lines are, my dear Mr. Bennett, said Mrs. Bennett, Mrs. Bennett. तो मिसेस बेनेट कहती हैं, ओपनिंग लाइन जो हमारी, कि मिस्टर, माय डियर मिस्टर बेनेट, said Mrs. Bennett, do you know that the Netherfield Park, yes, Netherfield Park is an important thing here. I am talking about the opening lines, and in the opening lines, we have opening lines, my dear Mr. Bennett, said Mrs. Bennett one day. एक दिन मिसेस बेनेट कहती है कि my dear Mr. Bennett, have you heard that Netherfield Park is let at last? Here, Mrs. Bennett wants to say something, and she starts with these lines. Actually, what happens? There was a palace called Netherfield Park. Netherfield Park, a palace. इसका नाम था Netherfield Park. Netherfield Park, and it was to be let. It was to be let means it was to be given on the rent to someone, but it was expensive, and not a normal not a normal person could not take this. And what happens, a man, Mr. Bingley, who was a young man, he was unmarried, और हमारी बुक में सिंगल कहा गया बैचलर कहा गया उसको. He was a bachelor, he was a single, it means he was not married, and he was of young age. And the interest of Mrs. Bennet, Mistress Bennet, is that she had 5 daughters. As I have talked in the introduction of the characters, she has 5 daughters, and she was of the view that one of her daughters will be suited to her. He will fall in love with one of her daughters and will get married. But उसको इस चीज का भी फिक्र था, she had concern that if some other person will meet him prior to them, before them, so he will get married to some other girl, and it will be an unfortunate thing for them. इसलिए वो कहती है कि मिस्टर बेनेट, क्या आपने सुना है कि आफ्टर ऑल नेदरफील्ड पार्क जो वो बिक गई है, किराए पे जो लग गई है, एंड बट मिस्टर बेनेट जो है वो कोई ज्यादा पर ध्यान नहीं देते इसकी बात को, मिसेस बेनेट का. आफ्टर दैट जब ये देखती है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, मिस्टर बेनेट इज नॉट इंटरेस्टेड, शी अगेन टेल्स, वुड यू नॉट वांट टू नो हु हैज टेकन दैट. तो इस बात पे मिस्टर बेनेट कहते हैं कि नो डिफरेंस, व्हाट नो मैटर टू मी, अरे कोई भी लेगा, हमें क्या है. देन
she again insists Mr. Bennett that आप कैसे फादर हो, what kind of father you are. कहती है what this will be a very fortunate for us that if you meet him, if you visit Mr. Bingley, you meet him, and definitely he will come with you. You tell about her daughters, and he will see our daughters, and definitely he will like one of our daughters because these are 5 daughters. मैंने एक अच्छी तरह से मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस बात को कि जैसे आपने महाभारत देखी होगी कि महाभारत में एक जो देवी हैं जो जिनका नाम पांचाली है, जब पांचों पांडव जो है वो निकले होते हैं बाहर कोई भिक्षा के लिए या अपने तपस्या में जब थे, तो वहां से जब वो जाते हैं स्वयंवर में, जो एक स्वयंवर होता है वहां पे, तो एक्चुअली पांचाली जो होती है उसने बहुत बड़ी तपस्या की होती और भगवान उसे ब्रह्मा उसे खुश होकर उसे वरदान देते हैं कि मांगो तुमको क्या मांगना। तो ये कहती है मुझ में मेरा पति जो हो उसमें ऐसे ऐसे गुण हो, यानी इतने ज्यादा वो शरीफ भी हो, अकलमंद भी हो, धनुषधारी हो, योद्धा भी हो, और एट द सेम टाइम दूसरे की रेस्पेक्ट करने भी वो वाला भी हो, या किसी मुसीबत की घड़ी में वो अपने देश को अपने परिवार को बचाने वाला भी हो, या किसी के साथ कोई किसी को न्याय देने वाला भी, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर की बात करेंगे अगर हम, तो वो एक धर्म के राजा थे, धर्मराज जिनको बोलते हैं। तो इसी तरह से वो 5 गुण जो थे, 5 गुण जो अलग अलग मांगे थे, हुआ क्या कि भगवान का करना ये था कि पांचों भाई जो पांचों पांडव जो थे उन सब में एक यूनिक क्वालिटी, खास क्वालिटी जो थी जो कि बाकी दूसरों में नहीं थी। तो इसी तरह क्या हुआ कि आफ्टर ऑल जब स्वयंवर हुआ तो उसके वरदान के मुताबिक ये जब वहां से उसको जीत के ले आते हैं, 5 भाई गए थे, जीता तो एक ही भाई नहीं थे न था पांचाली जी को, लेकिन जब वो वापस आती घर में आती है तो वो मजाक कर रहे थे अपनी माँ के साथ, कहते माँ हमने भिक्षा लाई है, हमने कोई चीज लाई है आज। तो बगैर सोचे समझे पांडवों की माता जी कहते हैं कि पांचों भाई बांट लो, आपस में बांट लो। तो चलो अब आप इससे आगे जानते हैं कि इसी तरह से वो पांचों पांडवों की बीवी बन के रह के बेचारी, एक्चुअली बात जब उनको समझ नहीं आई तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाया था कि एक्चुअली ये तुम्हारी देन थी, तो आपने मांगा था वर। तो ये 5 एक आदमी में 5 अलग अलग क्वालिटी नहीं हो सकती। इसी तरह से ये जो मिस्टर जो बेनेट डॉटर्स हैं, तो दे आर आल्सो यूनिक इन देयर डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो पांचों लड़कियां जो बहुत ही कैरेक्टर, उनका अलग अलग कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छाई अपने आप में, बहुत अच्छाइयां हैं उनमें, यूनिक क्वालिटीज हैं। तो इसी तरह से Mrs. Bennet is confident, she is sure that one of her daughters would be liked by Mr. Bingley, and he will get married with our daughters, and in this way we will be a fortunate person because he was a person of long fortune। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, पर्सन ऑफ लॉन्ग फॉर्चून, उसकी बहुत बड़ी किस्मत है। एंड ही टेक्स $4,000 पर ईयर। तो इतनी बड़ी इनकम उस दौरान की बात करनी है, काफी पुरानी जब लिखा है तो उस दौरान $4,000 काफी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो इस तरह से मिसेस बेनेट कहती है कि ही इज पर्सन ऑफ लॉन्ग फॉर्चून, ही इज सिंगल, ही इज बैचलर, एंड इट विल बी ए वेरी लकी थिंग फॉर अस if one of our daughters will be married to him. But Mr. Bingley did not take any interest. In this way, Mrs. Bennet she got irritated. वो इरिटेट हो जाती है। She says you are vexing me. आप मुझे नाराज कर रहे हो, आपको तो मेरा गुण गाना चाहिए था जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। After that, he simply says, Mr. Bennet simply says that you go and meet Mr. Bingley, or you can take the daughters and meet him, and you have other option also कि
सेंड द गर्ल दमसेल्व्स, लड़कियों को खुद ही भेजो वहां पे, वो खुद ही जाएंगी उसके साथ मिलेंगी। उनकी आपस में बातचीत चल रही होती है कि होता क्या है। इतने में एलिजाबेथ हु इज ए सेकंड डॉटर, शी सेज दैट मदर व्हाई आर यू सो वरीड, आप परेशान क्यों हो। मिसेस लॉन्ग जो है, शी हैज प्रॉमिस्ड अस दैट शी विल अरेंज और विजिट विद मिस्टर बिंगले इन सम असेंबलीज, जब कोई प्रोग्राम होगा कहीं पे, कोई जैसे कोई मिलना जुलना होता है, जैसे पार्टीज वगैरह होती हैं। बट इम्पेशेंटली मिसेस बिंगले, मिस्टर्स बेनेट जो हैं, वो कहती नो, शी विल नॉट डू दैट बिकॉज शी इज ए सेल्फिश वुमेन, वो सेल्फिश हैं, एंड शी हैड हर नाइसेस टू, अपनी उसकी भतीजियां भी हैं, वो हम तुम्हारे लिए बात क्यों करेगी उसके साथ, मिस्टर बिंगले के साथ। तो इस तरह से उनका आपस में ये बातचीत चलती रहती है, टसल चलता रहता है। बट दे से दैट हाउ, हमारे आपके जो फादर हैं, वो कैसे ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं उनसे कि यू गो एंड मीट मिस्टर बिंगले एंड it is sure that he will come here, he will meet in our house, and he will see our daughters, and definitely one of our daughters will be get married with him, and it will be lucky for our daughters. और काफी देर तक जब इनका ये आपस में चलते रहती है बातचीत, तो होता क्या, ऐसा होता कि आफ्टर ऑल मिस्टर बेनेट कहते हैं कि मिस्टर बेनेट talk about, come and have it some talk about Mr. Bingley. Then replies Mrs. Bennet. She says, "I am getting ill of this name now." अब मैं तंग आ चुकी हूँ इस नाम से, मिस्टर बिंगले के नाम से, क्योंकि वो चाहती थी कि जब मैं इंटरेस्टेड थी, मैं इनको बार बार कह रही थी कि आप जाइए, आप यू गो एंड विजिट, यू मीट मिस्टर बिंगले एंड टॉक अबाउट द मैरिज ऑफ आवर डॉटर्स, बट देन यू वेक्स्ड मी, आपने मुझे निराश किया है। एंड अब वो इसी तरह से एक बार होगी, बिकॉज ही वॉज ए जॉली पर्सन, ही वॉज ए काइंड ऑफ जॉली पर्सन। हम मिस्टर बेनेट की बात कर रहे हैं। मिस्टर बेनेट वॉज ए जॉली पर्सन, खुश मजाज आदमी था, मजाकी आदमी था। तो उसने मजाक में यही बात भी कही थी कि जब उसने कहा था कि यू गो एंड अलॉन्ग विद डॉटर्स, तो इट विल श्योर दैट ही विल गेट interested in you because you are also one of the beautiful among your daughters. अपनी daughters के मुकाबले तुम भी तो खूबसूरत हो, शायद हो सकता है तुम्हें ही वो पसंद कर ले। तो इस तरह से वो करके आप यू हैव वेक्स्ड मी, यू आर गोइंग टू इरिटेटिंग मी, आप मुझे नाराज करने जा रहे हो, तो डोंट से लाइक दैट, इस तरह की बातें मेरे साथ मत कीजिए। तो लास्ट में ऐसा होता है कि मिस्टर बिंगले ही नरेट्स, he discloses the secret and he tells नो सॉरी, इससे पहले ऐसा होता है कि किटी जो है, उनकी डॉटर जो किटी बेनेट जो है, जो उनकी फोर्थ डॉटर है, तो शी डिस्क्रीट्स सम कफ। तो जब खांसती है तो उसकी माँ कहती है कि यू हैव नो वे ऑफ कफिंग, आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको तरीका नहीं है खांसने का, ये कौन सा तरीका है। आफ्टर दैट किटी के बाद उसके बाद जो एक लड़की हमारे लिडिया जो है, तो एक लड़की जो क्या करती है, वो शी वाज ट्रिमिंग द हैट, वो हैट को बना रही, तो वो ऐसे जाली पर्सन है, तो हंसते हंसते उनसे खेलता है बेटी से कि ठीक है, यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग द हैट्स, यू आर ट्रिमिंग एक्सपर्ट इन ट्रिमिंग द हैट्स, एंड डेफिनेटली मिस्टर बिंगले विल लाइक यू एंड यू विल गेट मैरिड विद हिम। तो इस तरह से जब खांसने की बात आती है, मिसेस बेनेट जो परेशान रहती है, देखो किटी खांसती है, इसको खांसने का तरीका नहीं है, तो इस तरह से शायद मिस्टर बिंगले अगर आएंगे हमारे घर में, मिलेंगे हमसे, तो तुम इस तरह से खांसोगी तो क्या होगा, ही विल बी इरिटेटेड, ही विल से दैट दे हैव नो, उनको कोई तरीका नहीं है, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, दे हैव नो वे हैव डिस्कशंस। तो इसी तरह से बेचारी मिसेस बेनेट उनको स्कॉल्ड करने, शी ट्राइज टू स्कॉल्ड हर डॉटर्स frequently on frequent occasions, but at last
Mr. Bennett discloses that Mrs. Bennett and my dear daughters, actually, I have paid a visit before you. When I have heard about, when you told us the first day me about the arrival of Mr. Bingley, and you had told me that he has taken the Netherfield Park and he has decided to settle here. तो कहता मैं उसी दिन I have I met him, I have talked to him, and he is going to pay a visit in the evening to our house. तो इतने में क्या होता है कि उसकी मिसेस बेनेट जो है, उसकी बीवी जो है, वो बहुत खुश हो जाती हैं कि आप देखो आप कैसे फादर हो, आप कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ एक्सीलेंट यू आर। तो इतने में कि सारी लड़कियां जो आपस में खुश हो जाती हैं, बच्चियां भी खुश हो जाती हैं कि देख, खासकर जो मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती है इनसे और कहती है आखिरकार अपनी डॉटर्स। उतने में जब उसने कहा, मिस्टर बेनेट ने कहा कि आई हैव पेड ए विजिट, आई हैव पेड ए विजिट, तो I have talked to him and he is going to visit our house this evening. Mrs. Bennett is very much happy, बहुत खुश होती है इनसे। और इतने में जब मिस्टर बेनेट कहते हैं कि I have paid a visit and he is going to come here this evening, तो he goes out of the room, दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे बैठे थे वहां से चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद ही शट्स द डोर, जब डोर दरवाजा बंद कर लेता है क्या होता है, उसके बाद मिसेस बेनेट कहती हैं दीज आर द क्लोजिंग लाइंस ऑफ दिस एन एक्सीलेंट फादर। क्लोजिंग लाइंस क्या है? क्लोजिंग लाइंस, तो इनमें कहता है क्लोजिंग लाइन, मिसेस बेनेट कहती हैं, मिसेस बेनेट कहती हैं Mrs. Bennet, what an excellent father, what an excellent father you have girls। तो कहती हैं, क्या कहती हैं? What an excellent father you have girls, and in this way the door shuts, दरवाजा बंद हो जाता है और आपका सीन खत्म। In this way, hope you have enjoyed my way of teaching. Actually, I was disturbed differently because I was going online side by side on my Facebook page, but due to some error in the network, and after that I was getting calls in between, and I have so many times I have to pause the video. I am so sorry for that. I expect you people to like my videos, share, comment and subscribe my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे पढ़ाने के ढंग से सहमत हो। And I will record another lectures on some different aspects, different parts of the language, grammar, or some other kinds of poetry devices. Hope you will enjoy this. इसी के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, stay socially distanced and stay home. Thank you very much. जय हिंद।